excited for the day. I am heading to a lot of good places in Bhadarwa. So are you with me? Let's go. Guys, I am in Mini Kashmir, Bhadarwa. This place is known as Mini Kashmir. So before going to Kashmir, I thought why not explore this beautiful place. And I am exploring Bhadarwa. I'm going to take you to some of the beautiful places in Jammu and Kashmir. So hold your breath and sit back. Bhadarwa is around 200 kilometers from Jammu. My host in Bhadarwa are superb. They are so nice. So they are trying to show me the good places in Bhadarwa, and one of the places they are taking me to is Padri. So welcome to Mini Kashmir. Honestly speaking, I too didn't know about Bhadarwa, but after coming here, I can vouch for it that this mesmerizing town is so beautiful that you will fall in love with it at the first glance. I'm on my way to this place called Padri. I've heard a lot about Padri. देखते हैं कैसा है. अभी तक my journey so far, oh my god, it has been superb. I believe that there are some road journeys so serene and stunning that cast a huge spell on us and can't be described in a mere few words. Bhadarwa Chamba Highway is one such road that would overwhelm you and leave you speechless for sure. Welcome to Padri! I am thinking कि भाई जब जम्मू इतना खूबसूरत है तो कश्मीर कितना खूबसूरत हो. आई एम सो हैप्पी. लेट मी टेल यू दिस यार, ऐसी जगह पे आके ना जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना सब दूर हो जाती हैं. Padri is situated at an elevation of 10,500 feet and gives ideal picnic goals which you shall cherish for a lifetime.
is a perfect picnic spot where you can spend time with your family or with your friends, or you can indulge in some adventure sports as well. During winters, skiing and ice climbing is very famous at this point, and in summers, you can go for trekking and paragliding activities. Or you can dance on the local song of Bhadarwa like I did. इंसानों के बाद अगर मुझे कोई यहाँ पे दिखा तो वो थी बहुत सारी भैंसें। ओह गॉड, इतनी सारी भैंसें। और ये भैंसें गुज्जरों की थी। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ कुछ यहाँ के गुज्जरों से। बैठ सकती हूँ आपके साथ? हाँ बैठो बैठो, क्यों नहीं बैठ सकती, बैठो। हिंदी आती है? हाँ, आप लोग बकरवाली हैं, गुज्जर से? गुज्जर हैं। एक्चुअली मुझे बड़ा मन था आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है ना। हमारी जिंदगी जो है ना, हाँ? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? अगर हम माल मवेशी के साथ बहुत अच्छे सलूक करते हैं और अच्छी तरह रहते हैं, और दूध घी बिजनेस भी करते हैं और खाते भी हैं। बच्चे लोग हमारे पढ़ते भी हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। हाँ। बच्चे लोग हमारे पढ़ भी रहे हैं, हाँ। और ऐश प्रस्ती भी कर रहे हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। I was so lost in the beauty of this place. I didn't even realize the time. I didn't feel like going back. In fact, I came to Bhadarwa only for a day. But after seeing how heavenly this place is, I decided to extend my stay for one more day to soak in some more of this place.